हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मौसम बहुत किचकिच सा हुआ है, बहुत किचकिच। मतलब कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रही है लखनऊ में। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम किचकिच। या तो बारिश हो तो बहुत अच्छे से हो, वरना ना हो। सुबह सुबह का टाइम है एंड टुडे आई एम हैविंग दीज पोहा ब्रेकफास्ट। चाय, आज मुझको चाय पीने का मन कर रहा था। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे घर पे वॉशिंग मशीन आने वाला है, जिस चीज़ का मैंने कई दिनों से मैनिफेस्ट किया था। क्योंकि ठंडी में यार कपड़े धुलना एकदम हालत खराब हो जाती है, खुद की भी और कपड़ों की भी। मेरी तो आदत वैसे भी बहुत खराब है, मैं कपड़े भिगो के एकदम भूल जाती हूँ। साझेदारी जो है ये भारत से दूर ले जा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो यार मशीन तो लग गई, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मेरे फ्लैट में बहुत लिमिटेड पानी और सिर्फ सुबह और शाम को 2-2 घंटे आते हैं, जिसकी वजह से मैंने आधे ही कपड़े धोए हैं। और वो भी पानी का डर था कि कहीं पानी चला ना जाए। टंकी का साइज है ये इतू सा। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वॉशिंग मशीन के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। वॉशिंग मशीन को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और जैसे ही मैंने उसमें कपड़े धुलने स्टार्ट किए, मेरा एकदम दुख 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 होने लगा कि क्या पता पानी ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, फिर क्या होगा। इसलिए मैंने आधे अधूरे कपड़े डाल के। दूसरी प्रॉब्लम ये आई है कि मेरे फ्लैट में स्पेस नहीं है, मतलब टेबल एक परफेक्ट स्पेस नहीं मिल रहा है कि कहाँ हम उसको रखें। देखते हैं इस दुविधा का क्या आंसर निकलता है। ये दुविधा किसी बड़ी दुविधा से कम नहीं है, बहुत बड़ी दुविधा है।